Hi everyone, welcome to DIPSA'S Academy. चलो वीडियो स्टार्ट करिवा कि 2020 ର concept को लेके so this is presented by Ipshita. Let's start the video. Okay. First होच हमर कोन ना हमर एटा कार्ड स्टार्ट हेतला ना MHRD डिपार्टमेंट जोटा कि हमर सेंट्रल मिनिस्ट्री अछि MHRD डिपार्टमेंट जोटा कि अबे रिसेंटली कन्वर्ट हेछि कोटा को ना MOE को NEP 2020 रे हमर जोटा बेसिकली रेकमेंडेड हेछि हमर तो that is formed the committee chaired by ISRO chairperson के थिला नामर former Dr. K. Kasturi Rangan for preparing the NEP. ठीक अछि तो the committee was constituted the committee के constituted हैला ना हमर जून 2017 रे and submitted its report and May 1st 2019 तो आ रिपोर्ट केबे सबमिट हैला May 31st 2019 रे रिपोर्ट सबमिट हैला ठीक अछि तो आउट जिनस वाला हमर कोन ना NEP 2020 was recommended by Union Cabinet of India in 29th July 2020 रे को अप्रूव हैला तो फर्स्ट हैला हमर कोन ना कमिटी कंस्टिट्यूटेड हैला हमर केबे ना जून 2017 रे एंड रिपोर्ट सबमिट हैला May 31st 2019 रे आ अप्रूव हैला केबे ना बाय यूनियन कैबिनेट जोटा हमर केबे ना हमर 29 जुलाई 2020 रे हमर अप्रूव हैला बिल हमर अप्रूव हैला केबे ना 2020 रे अप्रूव हेछि तो इंपोर्टेंट अछि क्वेश्चन आसीबो केबे अप्रूव हैला बिल ना 29 जुलाई 2020 एंड के रेकमेंडेड करथले ना भाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आउ डिपार्टमेंट कोन आछि हमर MHRD डिपार्टमेंट जोडा कि हमें भी कहबा को कोना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सॉरी हां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक अछि तो तापर होची हमर एटा कोना इट इज द थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी आउट होची हमर कोना हाउ NEP 2020 टा होची हमर कोना 21st सेंचुरी सब होची हमर कोना फास्ट एजुकेशनल पॉलिसी आउ एटा कोन छी हमर 66 पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इटा हमर मेंशन अछि आउ एटा हमर कोन बेस करछि बेसिकली हमर UN sustainability development goal that is the SDGs 4 SDG 4 हमर sustainable development goal केबे स्टार्टेड हेतला ना इन द ईयर 2015-30 अप टू 15 वर्ष जाए SDG 4 रा हमर कोन आसुची तो जो 17 टा गोल्स अछि SDGs 4 रा तो आरो गोल 4 टा होची हमर क्वालिटी एजुकेशन को प्रायोरिटी दै छै ठीक अछि एटा स्टार्टेड हेतला फ्रॉम द ईयर 2015 टू अप टू 2030 ठीक अछि तो एथरा हमरा कोन एम्फसाइज करछि ना हमर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन को बेसिकली एठी प्रायोरिटी दिया जाय छै नेक्स्ट कोन देखिया हमर एथरे कोन अछि तो इंट्रोडक्शन पार्ट टा बेसिकली हमर एठी कोन अछि ना दुई भाग रे ताकू पार्टीशन करा है छै गोटे होची हमर कोन विजन पॉलिसी आ गोटे होची हमर कोन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ठीक अछि तो विजन पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जहा हमर असले NEP 2020 को टू कैटेगराइज करा है छै गोटे होची हमर विजन पॉलिसी और होची हमर कोन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ठीक अछि तो विजन पॉलिसी रे कोन देखिया अछि तो विजन पॉलिसी रे हमर कोन अछि ना चारटा पार्ट आसीबो आ जोथरे के हमर 27 चैप्टर मेंशन अछि ठीक अछि फर्स्ट होची हमर स्कूल एजुकेशन फॉलोड बाय 5+3+3 and +4 system ठीक अछि पार्ट 2 टा होची हमर हायर एजुकेशन को and that is the other areas to be focused at making it happen हमर जो थिला कोना 10th +3 पैटर्न टा हमर रिप्लेस से की कहि छलेबे कोना 5+3+3 आ +4 पैटर्न एटा हमर कन्वर्ट हे छै ठीक अछि तो 5 वर्ष टा केते होची हमर कोना that is the 3 to 8 years तीन टा होची हमर केतना that is from the 8 to 11 years एटा 3 वर्षटा होची हमर केतना 11 ରୁ 14 4 वर्षटा होची 14 ରୁ 18 ठीक अछि जो 3 to 8 years रहला that is called as the basic foundational stage एटा होची कोना preparatory stage 11 ରୁ 14 टा होची हमर कोना that is the 11 ରୁ 14 टा हमर कोना that is known as the middle stage
एंड 14-18 हूँ आमर कौन ना सेकेंडरी स्टेज। आम ये कौन देखले ना बेसिकली विजन पॉलिसी स्टार्ट आमर ये करिकुलम एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड होची फ्रॉम द ईयर 3 एंड कंप्लीशन होची केते ना 18 इयर्स रे कंप्लीशन होची ठीक अछि। तो पार्ट 2 रे हमर कोन आछन हमर हायर एजुकेशन अदर एरियाज टू बी फोकस एंड मेकिंग इट हैपन आ कोन रेकमेंड हेछि हम देखिबा एठी। तो फर्स्ट होची हमर कोन ना 5 to 7% of the GDP। GDP माने होची हमर कोन ना दैट इज अ सॉरी हाँ तो देखिए एठी हमर कोन ना तो GDP माने होची हमर एठी कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक अछि। तो आ माने होची हमर कोन ना लाइक गोटे फैमिली रे हमर जो दुई जन मनकर सपोज अर्निंग मेंबर्स अछंती हला तांकर एनुअल इनकम केते तो जदि ताको हम कैलकुलेट को नबा जोटा कि हम डिटरमाइन करियो कोन ना गोटे जीडीपी वैल्यू को डिटरमाइन करो। सिमिलरली गोटे पूरा होल कंट्री को जदि हम देखिबा तो होल कंट्री हमर केते इंपोर्ट होउची प्रोडक्ट्स और केते एक्सपोर्ट होउची जदि हम ताको एनुअली गोटे काउंट को नबा तो दैट इज हमर कोन ना जीडीपी ठीक अछि। तापर होची हमर give priority onto the created true global citizenship and remove the disparities in access जहाँ भी हमारा disparities अच्छी education हो gender हो ताकू भी हमें remove के करे ताकू भी priorities दबा and जो हमारा कहना the promote the education for the socio-economically disadvantaged section मानक पाई और जो physical emotional and spiritual growth पाई the 21st century हमारा critical thinking creative thinking communication कोलाबोरेशन को मध्यटी प्रायोरिटी दिया जाउछि अछि। जोटा कि हमर कोन सी गला ना होल विजन पॉलिसी रो क्राइटेरिया प्रयास जो थे हमर कोन अछि ना 27 पेजेस ऑफ द सॉरी 27 चैप्टर्स अछि गला जोटा पर डिवाइड हला करना चारटा पार्ट जोटा कि हमर डिवाइड हला ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए हमर कोन ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमर कोन अछि ना ईच स्टूडेंट इज यूनिक focus on talent and interest learning styles development of intellectual emotional physical and the ethical abilities move away from the rote learning को move करके प्रायोरिटीज को एठी हमर करिछि ना हमर प्रायोरिटी बेसिकली दिछि हमर कोन ना लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी ठीक अछि। और मदर टंग और लोकल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन द क्लास और ग्रेड 5 then our consider smart classrooms or digital infrastructures, special care for the disadvantaged groups, gender inclusion, etc. Then our conco recommend coaching and NEP that is the ECC को priority देची curriculum framework को higher educational institution को national research foundation को finance education को three language formula को school exams को active 2009 another school exam national mission on education education governance and vocational guidance ठीक अछि। ECC कौन रेकमेंड करिछि ना हमरो ईसीसी हमरो रेकमेंड करिछि कोन ना जो गाइडलाइन ता देला कोन अछि जरा हमरो ना दुई पार्ट डिवाइड होछि हमरो करिकुलम कोन अछि ना फर्स्ट गाइडलाइन हमरो कोन आसीबा पेरेंट्स आ हमरो टीचर्स मानन को एठी प्रायोरिटी देला कहा को ना अप टू द एज ऑफ द 3 years of age and an educational framework for students between the age of the 3 to 8 years तो एटा हमरो बेसिक फाउंडेशनल स्टेजेस बा हमरो बालवाड़ीज आउ अंगनवाड़ी सिस्टम आसीगला एंड स्कूल लोकेटिंग विद द प्राइमरी स्कूल्स को रेडी दे ठीक अछि। तापर आसीगला हमरो ना करिकुलम फ्रेमवर्क 5+3+3 एंड तो 5 वर्ष हमरो एडी कोन अछि ना फाउंडेशनल स्टेज आसीगला एथरे कोन आसी अछि ना 3 years स्टार्टेड वाइज आउ हमर एथरे कोन ना प्री प्राइमरी बा नर्सरी टू क्लास 2 जांडा कंप्लीशन हला प्रिपरेटरी स्टेजेस फ्रॉम द क्लास 3 to 5 middle stages to class 6 to 8 and secondary 9 to 12 next that is the higher educational reforms रे हम कोन आसीबा ना एठी हमर कोन आसी ना setting of the नेरा setting कला हमर कोन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेराटा होच हमर फुल फॉर्म होच माने नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक अछि। आ पर हमर कोन सेपरेटिंग ना फ्रॉम द यूजीस तो कोन हेतला ना हमर नाक टा
जहाँकि आमर कौन ना यूजीसी अंडर रे आमर नाक आसी जाउछि ठीक अछि नाक एस्टाब्लिश किए गथला ना यूजीसी 1994 रे आउ त हेडक्वार्टर डा कोथि अछि आमर बेंगलोर रे अछि ठीक अछि तापरे आर काम कोन ना जोड़ाक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस अछि ना ताकू अप्रूव दबा ठीक अछि अक्रेडिट करबा काम होछि कार नाक रो जोड़ा कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अछि बट एठी कोन सजेस्ट कला ना हमर नाक ता यूजीसी रू सेपरेट है कि that should be an autonomous as well as Indian body. Then the one is that is the National Research Foundation. National Research Foundation number called Australia. It would be an autonomous body that would administer the mentoring, funding, and capacity building valid in the research in India. Basically, our जो research sector जहाँ भी रहला तो एठी खाली focus कौन कला ना हमर National Research Foundation को focus करे ठीक अछि. Next, that is the financing education. जेमति हम कहली जीडीपी होची हमर कना gross domestic product एठी को recommended करछि ना हमर NEP 2020 टा recommend करिछि जे हमर expenditure of 6% of the GDP on education ପାଇଁ ଆଉ ତାର current को double करिके 10% करियो total public expenditure to 20% in the next decade was recommended. Next, that is a three language formula. The three language formula रे हमर कोन आछि ना एठी continued and flexibility in the implementation of the provided. The first हमर के recommended करले three language formula ना education commission 1964 to 66 जोटा कि recommend करथले हमर three language formula को ठीक अछि तो एठी हमर कोन इश्यू अछि ना गोटे हिंदी स्टेट आसीबो थ्री लैंग्वेज formula आउट आसी हमर कोन ना नॉन हिंदी स्टेट आसीबो ठीक अछि तो हिंदी स्टेट रा हमर कोन आसी होछ ना एठी तीनटा आसीबो लैंग्वेज ना थ्री लैंग्वेज जेतु अछि मेंशन तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो फर्स्ट रा हमर एठी कोन आसी जाउछि ना हिंदी स्टेट रे मदर ऑफ लैंग्वेज टा कोड आसी जो हमर ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टा हिंदी आसीबो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज द इंग्लिश और थर्ड टा हमर कोन आसीबो संस्कृत बट नॉन हिंदी स्टेट रे हमर एठी कोन आसीबो ना फर्स्ट लैंग्वेज टा हमर कोन आसी जिवो ना रीजनल लैंग्वेज एंड सेकंड टा हमर एठी कोन आसी जिवो सेकंड टा हो जो हमर कोन दैट इज नोन एज द इंग्लिश and third language हमर कोन आसी जिवो ना that is known as the Hindi ठीक अछि तो it कहला ना हमर three language formula state government should adopt the implementation of study of the modern and modern Indian languages apart from the Hindi and English in the Hindi speaking states को replace करके हमर एठी कोन आसी modern Indian languages आसी जिवो and Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking states. तो हिंदी रे हमर इंग्लिश भी आसीबो और कोन आसीबो रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी देला कोटना नॉन हिंदी स्टेट रे देखो हमर करना आरटी एक्ट 2009 तो आरटी एक्ट 2009 हमर कोन इंक्लूड करछि ना अर्ली चाइल्डहुड सेकेंडरी स्कूल्स एंड कोन कहछि ना हमर एठी कि 3 to 8 इयर्स चाहि कवरेज फुली कवरेज ऑफ द एजुकेशन आरटी एक्ट हमरो approved hela na 1st April 2010 and our suggestion na in addition it suggests the elimination of the detention of the children until class 8 ठीक अछि ता माने कोन ना केही भी फेल हेबे नै एंड सबु स्टूडेंट्स जो माने भी अछि क्लास तो से माने प्रमोटेड हेबे कोन हमर नेक्स्ट क्लास सब बेले प्रमोट हेबे ठीक अछि up to the class 8 next हो जे हमर कोन स्कूल एग्जाम रिफॉर्म स्कूल एग्जाम रिफॉर्म रे हो जे हमर कोन स्टेट सेंसस एग्जाम होबो in classes 3 5 and 8 how कोन recommend करछि ना कि classes 3 5 और 8 जो माने भी स्टूडेंट्स रहले तो तांको हमें कोन ना तांको स्पेशल अटेंशन दिया तांको लर्निंग आउटकम्स को नेकी each and every students मानको को इक्वली ट्रीटेड करा हबन एंड इक्वली प्रायोरिटीज भी दिया हबो ठीक अछि another important recommendation was the restructuring of the 10th board exam that would mainly focus and test only the skills core concepts and higher order thinking and capacities then kon dekhiya rachi national mission on education through the information and communication technology तो एथले हमर कोन recommend करछि ना
फर्स्ट हो हमर कना नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को रेकमेंड कला तापर हो रेकमेंड द ऑटोनोमस बॉडी वुड बी administered under this mission out हो हमर it also the virtual laboratories in various disciplines in the remote access providing the remote access ठीक अछि ताले हमर कना हमर आईटी सेक्टर को एठी आईसीटी को प्रेड दिया हवा केमते इम्प्लीमेंट हवा एंड केमते हम डिजिटल virtual laboratories हमर केमते क्रिएट हे परियो आ various discipline केमते हमर remote access हे परियो easily then education governance जेमती ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର କଣ ନା ଆମର ଏଠି କଣ ଅଛି ନା NEP recommended the establishing of an apex body by PM under the राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमिशन ठीक अछि तो से सजेस्ट थी एमएचआरडी टू एमओई तो एमएचआरडी डिपार्टमेंट हमर जो अछि ताको एठी हमर कन्वर्ट कहन छी हमर एमओई रे एठी कन्वर्ट अछि ठीक अछि तब होछ हमर कना वोकेशनल कोर्सेस तो वोकेशनल कोर्सेस हमर कंप्लीट दे अछि ना क्लासेस 9 to 12 मस्ट रिसीव द वोकेशनल एजुकेशन एटलीस्ट वन वोकेशन ठीक अछि तो नेक्स्ट हो हमर कना नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और एनएसक्यूएफ at the competency level and higher educational institution must also provide the vocational courses and integrated in the undergraduate education program तो एटी कौन हला ना हमरो vocational courses तो दिया होगा आपने 9 to 12 जो मैंने students रॉयल क्लासेस रो तांको आउट हो जा हमरो कौन ना कि national skill qualification भी जोटा कि हमरो कौन ना and competency level और जोटा कि हमरो vocational courses को मध्य प्रायोरिटी देछि कुछ केमति कि हमरो vocational skill development करे जेमति पिला मानकर from the classes 9 to 12 जाए thank you and video ठीक ठाक लगले समस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें thank you so much